Yes, yes. See on this screen, if you see organizations, in the left hand side you have this list, right? Locator. So all अभी my series start with 777. These are बट the, हाँ सर। गो राइट, गो लाइक स्क्रॉल डाउन, गो राइट, स्क्रॉल राइट है ना, हाँ यहाँ पे राइट चाहिए। अभी आपको देखो इसमें ये तो पता चल रहा है कि यू हैव दिस मच ऑफ वेंडर। हाँ, इसमें वेंडर भी है, कस्टमर भी है। हाउ यू विल डिफरेंशिएट कि विच वन इज माई वेंडर, विच वन इज माई कस्टमर? correct. And how you will get to know all these are for your company code, or maybe this is for some other company code also. Exactly. So you cannot get it complete information here. So SA16N. हाँ, then you need to go to SC16 and enter table name LFA1 or LFB1. एंटर, नहीं नहीं, पहले एंटर करना है। गो बैक, गो बैक। Okay. अभी तो इन टेस्ट सिस्टम वी हैव वेरी लिमिटेड वेंडर्स, अदरवाइज यू नीड टू रिमूव दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स। जो 500 आ रहा है ना, उसको रिमूव करो सबसे पहले। हाँ बराबर, इसको रिमूव कर दो। हाँ, अब क्या है कि LFA1 क्या है, मास्टर डेटा टेबल है जनरल डेटा की। हाँ यहाँ सर। पे आपको नहीं पता चल रहा कि यू विल फाइंड वेंडर फॉर योर कंपनी कोड। यहाँ पे सभी वेंडर आ जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस टेबल, गो टू LFB1 टेबल। अंडरस्टूड सर। ये क्या है सर? मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स। हाँ हाँ, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम, ये 2,52,000 यार, इतने इससे ज़्यादा नहीं होंगे वैसे। नहीं तो अब इसको हटाओगे वो, इट इज़ ओके। रिमूव ओनली 500 बिकॉज 500 स्टैंडर्ड दिखाता है। यू नीड टू रिमूव दैट वन। नाउ LFB1 टेबल में यू हैव ऑप्शन टू फिल्टर विद योर कंपनी कोड ऑल्सो। ओह यस यस यस, करेक्ट तो यहाँ करेक्ट। पे जस्ट एंटर योर कंपनी कोड एंड देन यू विल गेट टू नो कि हाउ मेनी वेंडर्स यू हैव इन योर कंपनी कोड। हाँ ये 4 वेंडर है, जिसमें एक में रिकॉन अकाउंट अपडेट नहीं है, सेकंड वाले में। करेक्ट। सर और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। हम्म। ये जो सप्लायर हमने यहाँ पे बीपी क्रिएट किए हैं, तो हम्म। ये कौन सा रोल तक उनको एक्सटेंड किया गया है? तो इज दिस एक्सटेंडेड कंपनी कोड की वो परचेज? फिर हमें बिजनेस पार्टनर की टेबल में जाना पड़ेगा। उसके लिए रुको, मैं पहले टेबल निकालता हूँ। हाँ सर। दूसरा एक ऑप्शन मैंने कल से दिख रहा था, while you see the table, LFB1 is a better option. एक टेबल रन करो, BUT 100। BOT 100। हम्म। BOT 100। एंटर। जी सर। तो BP रोल, एक काम करना पड़ेगा आपको। उससे पहले जैसे आपने LFB1 में अपने 4 वेंडर निकाले थे अपने, हाँ। पहले LFB1 में जब उन चारों वेंडर को कॉपी करो। कंपनी को डालो, चारों वेंडर को कॉपी करो। हाँ, यहाँ पे सप्लायर पे क्लिक करो। हाँ, अब कंट्रोल C करो। ठीक है। नाउ हम्म। गो बैक। अब टेबल नेम डालो BUT 100। अब यहाँ पे बिजनेस पार्टनर में आगे जाओ, थोड़ा सा आगे, राइट 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 राइट। ये जो एरो है ना, राइट राइट एरो, हाँ इस पे क्लिक करो। यहाँ पे को पेस्ट कर दो, कंट्रोल V। नाउ नीचे एग्जीक्यूट का बटन है, या ओके कर दो, हाँ ठीक है। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट नाउ। ठीक है। अब आपके चारों वेंडर डल गए कि आप इन चारों वेंडर का देखना चाहते हो कि कौन कौन से रोल में, बिकॉज नीचे देखोगे आपको BP रोल दिख रहे हैं। बराबर। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर दो। अब ये देखो बता रहा है आपने रोल बनाया, फर्स्ट वाले को अगर देखोगे तो दो रोल में असाइन है, 301 301। एक है SKP1 I00, और फिर है SKP I01। तो ये दोनों रोल में असाइन है। करेक्ट। तो ये वाला BP तो आपको कंप्लीटली क्रिएटेड है, इंक्लूडिंग परचेजिंग रोल ऑल्सो। हाँ सर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन कौन से रोल में असाइन है। ये 303 आपका खाली कंपनी कोड में असाइन है, परचेजिंग वाले में नहीं है। 305 दोनों में है।
307 भी दोनों में है। समझ गया सर। अंडरस्टूड, ये बहुत बढ़िया चीज़ बताया आपने। ठीक है। बस। हाँ सर, इसको डिलीट सर हम नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं नहीं, आप डिलीशन इज नॉट अलाउड इन एसएपी। लेकिन उसको तो ये डाटाबेस ऐसे ही जंक करते रहेगा, मतलब इट विल कंटिन्यू टू बी देयर। हाँ, तो डेटा वहीं पे रहेगा, आपको डिलीट क्यों करना है? ठीक है। डेटा रहेगा रहेगा, आपके पास कोई वो मेमोरी का इशू थोड़ा ना है। जितना मर्जी डेटा आप उससे क्रिएट करो। बराबर। हम्म। सर ना ये मैंने सुबह ऐसे ही बना रहा था, जब बता रहा था ना, तो आई कंटिन्यू टू क्रिएट लाइक दिस। तो हाँ द होल एसओपी हैज बीन क्रिएटेड। हाँ, नहीं ठीक है, बिल्कुल इट इज़ गुड। तो ये एसओपी हमने बनाया है। हाँ, तो आप ये बना के ना इन सब सागर, सुरेंद्र और चंद्रशेखर और प्रियांशु को भी शेयर कर देना, इनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। वेरी नाइस, यस सर, आई डू दैट। एंड उसके बाद क्या है ना सर, ये बेसिक से एक बनाया है, सबको स्टेप बाय स्टेप हुआ है उसमें। हाँ हाँ उसमें हाँ एक मैंने बिजनेस कैसे बनाया हूँ, मतलब बिजनेस कैसे क्या है कि एसके हाँ पाई इज इन इंडिया कंपनी, जहाँ पे हाँ। आपको हेड ऑफिस किधर है, उसका फिजिकल ईयर क्या लेना है, पोस्टिंग पीरियड क्या लेना है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या लेना है, सो एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। संतोष जी, बिल्कुल ऐसे ही व्हेन वी डिस्कस विद बिजनेस वी डिस्कस दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विद बिजनेस, कि आपका लोकेशन कौन कौन सी है, क्या आपका फिजिकल मतलब मंथ होगा फिजिकल ईयर के लिए, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, और क्या पोस्टिंग पीरियड, सब कुछ ऐसे डिस्कस करते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं पहले। फिर इस डॉक्यूमेंट को रेफर करके हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एग्जैक्टली। उसको हम कहते हैं बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट। बीआरडी। नहीं नहीं, बीबीपी। बीवीपी। हाँ, तो और बिल्कुल यहाँ पे ये बनाते हैं। एग्जैक्टली सर। सर यहाँ पे देखिए बिजनेस पार्टनर कौन क्या कौन कौन होगा, हाँ इसका हाँ। नाम क्या है, सब और कुछ आपने मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया हूँ। थोड़ी थोड़ी जो अपनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, जैसे कंपनी कोड सेटअप के लिए आपको टी कोड, बस ये हाँ। सब नहीं लिखते ना ही हम ये स्क्रीनशॉट देते हैं एसएपी के। बाकी बराबर। बिजनेस सिनेरियो क्या होगा, कंपनी कोड का नाम क्या होगा, मेरे 4 टाइप के वेंडर हैं तो उनके क्या नाम रखूंगा, सब कुछ ऐसे ही हम मेंशन करते हैं बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट में। वेरी नाइस। तो हाँ, आप मुझे जॉब दिलवाओगे सर, क्या बोल रहे हो? सर आप मुझे दिलवा देना पहले तो। आयो। आप इन्फोसिस में आप मुझे दिलवाना पहले। जरूर सर। ये देखिए, ये सब हमने बनाया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाया हूँ। हाँ जो हाँ मैं हाँ बना रहा था, ये सब कहाँ पे क्या होगा, हर हाँ चीज। एंड एलएसडब्ल्यू बनाया हूँ सर। हाँ। नहीं, अच्छा अच्छा है, आपने बहुत अच्छा स्टेप बाय स्टेप किया है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट। एलएसएमडब्ल्यू में बैच डिटेल्स में क्या क्या होगा, पूरा पूरा 14 स्टेप्स, ऑल स्टेप्स इज इन एक्सप्लेन हियर, एवरी स्टेप। बट स्टेप तो आपने लिखे, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि उस स्टेप में हो क्या रहा तो है? टू सर्टन एक्सटेंट, नॉट आई मीन नॉट कंप्लीटली सर। हाँ नहीं ठीक है, अभी के लिए इट इज़ ओके कि हाँ आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, बाकी एक बार और करेंगे LSMW, बिकॉज वैसे ही 14 स्टेप्स हैं। तो यस। स्टेप तो आपको खाली एग्जीक्यूट करने हैं, आपको मुझे भी नहीं पता उसमें कर क्या रहा है सिस्टम, वो बैकएंड में होता है। हाँ, ये टॉलरेंस ग्रुप बनाए हैं। हम्म उसके बाद जेल क्रिएशन, अभी अकाउंट्स पेबल का फ्लो यहाँ पे बनाया। एटलीस्ट बेसिक्स, हम्म जो पीपल हु डजंट अंडरस्टैंड द एपी लाइफ साइकिल, तो उनको हम्म। ये समझ में आएगा कि एपी लाइफ साइकिल कैसे होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसके बाद फिर ये हमने बनाया कि बीपी और इसका वेंडर का रिलेशनशिप क्या है, राइट। हाँ 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 उसके बाद फिर ये चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर बीपी बिजनेस पार्टनर कैटेगरीज, वेंडर हाँ। कैटेगरीज, नंबर रेंजेस, नंबर सीरीज एंड असाइन देम। सो ये एक सीरीज है, बिकॉज इट हैज टू गो साइमल्टेनियसली, राइट, दिस राइट साइड राइट एंड दिस साइड। राइट राइट राइट। एंड उसके बाद नीचे हमने बनाया है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीपी रूल्स। हाँ उसके बाद हाँ। कंपनी को डाटा, जनरल रूल्स, कंपनी को डाटा, परचेजिंग डाटा, उसके बाद उसको सिंक्रोनाइजेशन, हम्म ये सिंक्रोनाइजेशन आ गया। उसके बाद फिर पुशिंग आई मीन क्रिएट बीपी हाँ। वेंडर, बीपी एंड वेंडर्स, हम्म। ये बनाए, ये कल हमने बनाया है। ये सब है सर। और उसके बाद और एक अच्छा चीज़ क्या बताऊँ आपको, आई थिंक एक्सेल में था ये। यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है। फॉर हाँ एग्जांपल, ये आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। हाँ। इसका क्या फ्लो चार्ट है और क्या इसका टी कोड्स क्या है, एग्जैक्टली। कंपनी कोड, फिजिकल ईयर करोगे, पोस्ट इंक्लूड करोगे, तो ये मुझे बहुत याद रह जाता है, ऑल द टी कोड्स। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बनाया आपको, डेफिनेटली इट विल हेल्प अ लॉट। एंड इस तरह पे एलएसडब्ल्यू का बना रहा था, फिर मैं सोच रहा बनाओ ना बनाओ कि 14 नहीं नहीं, स्टेज है। बनाओ बनाओ। इट विल, अब जितना आप बनाओगे ना उतना आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। हाँ। और इसके बाद फिर आएगा अकाउंट्स पेबल में, पूरा अकाउंट्स पे पूरा एकदम वन बर्ड्स आई व्यू में सब रहेगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसे ही बनाइए, आपका आपकी खुद की नॉलेज भी एनहांस होगी और आपके फंडे भी क्लियर होंगे, और आपको जैसे बनाओगे माइंड में क्वेरी भी आएंगी, जैसे आज हमने बिजनेस पार्टनर की देखी क्वेरी, यस। ऐसी और भी क्वेरी आएंगी, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
एग्जैक्टली। सो अब देखो सर, ये बेसिक हो गया, एलेंडर हो गया, एफपी रह जाएगा, इंटर कंपनी रह जाएगा, एआर रह जाएगा, फिस्टर। सो इट विल हैव एवरीथिंग इन वन पेज, राइट? हाँ इसको बिल्कुल। अगर प्रिंट निकाल के अगर तुम दीवार में लगा दोगे, तो इफ यू हाँ कंटिन्यू सी दैट ना, तो आपको उसका फ्लो कंप्लीटली पता चल जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और हम। अकाउंट्स पेएबल का इनवॉइस पोस्टिंग करवा रहे थे, प्लस हम्म, द एंड टू एंड माइरो एंट्री भी हमने किए थे, ठीक पीओ है। नॉन पीओ हमने किए थे। मतलब हमने P2P साइकिल कर ली, क्रिएटेड बीपी ऑल्सो, नाउ वी विल गो फॉर द एडवांस पेमेंट। या ठीक है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ P2P साइकिल। नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज एडवांस पेमेंट, एंड इन एसएपी वी कॉल इट डाउन पेमेंट टू वेंडर ऑल्सो। व्हाट इज एडवांस पेमेंट? डू यू हैव आइडिया? Anybody has any idea about advance payment? Sir, advance payment is basically we payment to vendor in advance, or Hmm. or then then we get the items later on from the vendor Right, 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 on the behalf of our payment. right, This right. is called advance payment. Correct, correct. So when we are discussing with vendor to provide us some kind of service or maybe material, vendor says that I would be providing the service or material once I will get advance payment of maybe 20%, 30%, 50%, or it could be 100% also. So it would be terms and condition. So after agreeing that we will be giving the advance payment of this percentage, then vendor will be providing the service or material, whatever we are requesting to them, and then later on they will release the invoice also to us. So there are three steps, I would say. First one is advance payment. Advance payment could be partially or fully. This is also two scenario. In advance payment to partially, we will get the service, we will get the material, and then we will get the invoice. We will book the invoice. Invoice, we may get it completely, or we may get the invoice partially also. And then we will make a payment after that, because here we have made the partially advance payment and the partial amount is pending. That we will make a after complete invoice. This is first scenario. Second one is complete advance payment 100%. So we are making the advance payment completely, then we will get the service or material, and then we will get the invoice to book. After that, we don't need to make any payment because we have made the complete payment in advance. So this could be two scenario. Understood? Understood, sir. यस सर। Now let me just read the theory. In company, when we purchase some material or service from vendor, at that time vendor send us bill of purchase material and service. This is normal. After that, we have to verify invoice and release the payment. This is for the P2P cycle. Now let's talk about the P2P advance process. In some scenarios, it may be necessary to do advance payment, which is prepayment, or we call it down payment also. In simple word, advance payment means a payment which is made to vendor or supplier before receiving goods or service. Okay, this is same theory which we discussed. करेक्ट। Now let's move further. So as in AP, in account groups, we had four types of accounts: domestic, foreign, import, employee, like that. Same way, we will have, definitely we have a vendor, so we will be making the payment to them. So for that, as we created reconciliation account for the vendors, now we need to create again reconciliation account for the advance payment. When we are doing normal invoice, normal payment, in that case, we create reconciliation account which we assign in the vendor master. We call it reconciliation account. This is also reconciliation account, but this is for advance payment. When we are making the advance payment to vendor, then we will have entry in this reconciliation account, not in the reconciliation account which is assigned in the vendor master. Are you able to understand? यस यस। इट इज काइंड ऑफ ए प्रीपेमेंट अकाउंट, राइट? प्रीपेमेंट, प्रीपेड अकाउंट। Prepayment account, or you can say prepaid, or in SAP we call it special GL. गॉट इट। Let me just try to explain in the Excel also. So here we have vendor. Suppose 1, 2, 3, 4, 5. When we are booking the invoice in vendor, or we are making the payment to vendor, normally whatever we have
learned in the previous sessions. And this is the reconciliation account which we assigned in the vendor master. So whenever we are doing vendor invoice, we will have impact in the in this as well as in the reconciliation account. So whenever we are using vendor posting the invoice, system will have impact in the vendor as well as reconciliation account. Understood? We will Yes. have entry of 1,000 in vendor line item report also, and we will have 1,000 line item open in the reconciliation GL report also. Correct. Now I will make the payment to vendor. Then also I will have impact. Sorry. Suppose here it is minus, and here it is, you can say it is also like that. Okay, so when we are making the payment, then amount will be also sitting in my vendor report as well as in my reconciliation report. Clear? करेक्ट। सर Now who? सर एक चीज पूछ रहे हैं यहाँ पे। हमें एक एंट्री पोस्ट करना है जो वेंडर में, हाँ, बाकी द एंट्री इन वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट इट विल ऑटोमेटिकली गेट पोस्टेड it because will that is come. what is linked to that particular vendor. That is linked because we have assigned this reconciliation account in the vendor master. Correct. No second entry is required in the GL account. No, no. Got it, sir. Please We are proceed. not going to post any second entry. We are not going to clear second entry. We are not going to do anything. Only we are putting the invoice and payment in the vendor account. It will post in the reconciliation account also automatically because vendor is sub ledger and reconciliation account is the main ledger which will be showing you in the balance sheet for the liability side that we need to make a payment of this one. So this amount will not come in the balance sheet. This amount will be coming. But for the vendor report, which is FBL1N and here FBL3N, both the reports will be showing you both the amounts with the same document number. You are posting the document here. Impact will be in the reconciliation account also. This is normal P2P. Normal P2P. It is normal invoice, normal payment, no advance payment as of now. Okay. Yes. Now let me go to second scenario, which is advance payment. Now, wait. This first scenario. Now this is my second scenario. I will be changing the color for this one. And now I will be removing this color. Okay. Now I'm making the advance payment to vendor. So firstly, I will make the advance payment. Now I'm putting the entry in this vendor. Let me remove this one. This is my reconciliation account. And now I have a advance recon account also. Suppose this is like that. सर एक Okay. क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है। एडवांस रिकन अकाउंट पर हमने जीएल बिकॉज दिस इज एडवांस पेमेंट अकाउंट इज एन जीएल अकाउंट राइट, वी आर क्रिएटिंग FS00। हाँ, देन एडवांस रिकन अकाउंट भी दूसरा में बनाना पड़ेगा क्या? नहीं एडवांस रिकॉन अकाउंट तो बनाने जा रहे हैं FS00 में भी हम। ये तो हमने पहले ही बना लिया था रिकॉन अच्छा अच्छा अकाउंट अच्छा अच्छा, में हाँ हाँ असाइन हाँ। किया वेंडर मास्टर में। अच्छा समझ गया समझ गया। हाँ, आई वाज कंफ्यूज्ड बिकॉज द टू अकाउंट्स। ठीक है, मैं समझ गया नाउ, ठीक है, अंडरस्टूड नाउ। ये मेरा हो गया वेंडर रिकॉन अकाउंट, ये मेरा हो गया वेंडर एडवांस रिकॉन अकाउंट। यस यस। ठीक है। अभी दिस वेंडर इज हैविंग दिस अकाउंट इन द मास्टर डेटा and while making the normal invoice and normal payment, impact will be with vendor and normal recon account, which is this one. But now we are making the advance payment, so impact will be with definitely with vendor. It is with vendor only. But now after making the advance payment, impact will be with advance recon account also.
which is like this way. So in this process, we will have impact in vendor and advance record. We will not have impact in the normal recon account. But in the normal scenario, we will have impact in the vendor and normal recon account. Clear? So sir, we make two accounts, na? Vendor recon account or vendor advance recon account. But at the Correct. time of advance payment, we create advance recon account also with vendor recon account, which we already created in the master BP master of vendor. हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट Okay. ठीक है या हम अभी क्या हम वेंडर रिकन अकाउंट जो अभी बना वेंडर एडवांस पेमेंट रिकन अकाउंट जो बना रहे हैं सर, उसको क्या हम वेंडर सब लेजर पे उसको क्या फिर हमें असाइन करना पड़ेगा? नहीं we will not assign this advanced recon account in the vendor master but we will do different configuration जिससे this उसको recon लिंक हो जाए। account will account have linking between this vendor. ठीक है, ठीक है। ठीक है अभी आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि व्हेन यू आर मेकिंग द नॉर्मल इनवॉइस और नॉर्मल पेमेंट इम्पैक्ट विल बी विद वेंडर एंड नॉर्मल रिकॉन अकाउंट व्हेन यू आर डूइंग द एडवांस पेमेंट इम्पैक्ट विल बी विद नॉर्मल वेंडर एंड एडवांस रिकॉन अकाउंट impact will not be with normal reconciliation account. So this I remove it like that. Then this report would be showing you data in this GL. Okay, so here I say cross. There is no impact in normal recon account. Sir, but during the creation of vendor, we created both the account, vendor master or normal recon account. But Uh, at the time of advance payment, we also created advance recon account. So we deleted that recon account which we created नहीं, नहीं, before in the whatever we already. have done, whatever we have done in the P2P, that is correct. Now we are Hmm. going to create the advanced reconciliation account. For that, we have Okay, a different configuration to link with vendor. okay. But already that we created before already linked vendor recon account. Na, we haven't deleted na. No, Uh, no, we did not delete. We are not going to delete. We have only okay, assigned recon account to my vendor. This account I okay, assign to this vendor. okay, okay. Okay. Now, So at currently we have both the account, vendor recon account or vendor advance recon account, but we only use vendor recon account at yeah, the time of we advance payment. we only use the normal recon account to assign to vendor, but this Okay. also we need to assign somewhere so that linking between vendor should be there. For that, Okay. we have a different configuration to Okay. 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 do. Understood regarding the concept That's where we get the data? understood, sir. ओके। Now, let's create a reconciliation account and then we will do the configuration. Okay. For that, we need to run FS00. हमारी कंपनी कोड थी 3301। यहाँ पे चेक कर लेते हैं रिकन्सिलेशन अकाउंट कौन कौन से बने हुए हैं हमारे पास। हमारे पास डोमेस्टिक वेंडर का बना हुआ है तो वी विल क्रिएट डोमेस्टिक एडवांस पेमेंट। ठीक है तो उसके लिए wait, उसके लिए आई विल गो टू OBD4 टू डिसाइड विच अकाउंट रेंज आई विल बी यूजिंग बिकॉज normal recon account is my liability but advanced recon account is my asset. ठीक है तो let's go to this is recon. Is it clear why I'm going to find the यस सर। account group for my asset? यस। I'm not creating the recon account in the same sequence because that is my liability and this is my asset. And what is a chart of account? GG01। Here is- So while creating the reconciliation account for normal, I use this range. This is for accounts payable. Now I am creating the reconciliation account for advance payment. I can go for current asset or I can go for miscellaneous assets. It's up to me because when I'm making the advance payment, this is my asset.
So let's go for this one, current asset. Enter, create. This is already been created. I believe yes, because this is vendor one. Oh, bank one. Now use the second number. Second number is for yes bank. Let's use the third one. Third one is not available. Third one is available. Let's create this one. So this would be my balance sheet. This would be my current asset. And this would be, you can say, advance domestic vendor. Domestic vendor. ठीक है, this is my advance reconciliation account. With the description you can understand, and when we will be doing the configuration, this will be considered as special reconciliation GL, which is advanced reconciliation GL. Control tab, here it would be vendor. Now do I need to mark this open item or not? Yes, sir. Why? It's a balance sheet account. But I am saying no, I don't need to maintain this open item. वैसे कितना क्लियर होगा? We have to do the clearing manually also, right? No, we are not going to do any clearing in this GL. Clearing होगा, but we are not going to do in this reconciliation account. This is reconciliation account, so we don't need to mark it open item. It is automatically open item because it is reconciliation account. पर सर हमने तीन अकाउंट बैलेंस शीट अकाउंट में नहीं करना चाहिए था, राइट? वन इज योर मेन बैंक अकाउंट, देन वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट एंड रिटर्न अर्निंग। रिटेन अर्निंग मेन और मेन इक्वल, बैंक। ये या वेंडर नहीं, कस्टमर भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, ओके ओके ओके। तो हम आगे देखेंगे। देन यू कैन से बैंक मेन जीएल। ये बैलेंस शीट जीएल है, बट वी आर नॉट गोइंग टू मार्क इट ओपन आइटम। ठीक है, नाउ गो टू फील्ड स्टेटस ग्रुप, reconciliation account है। Let's see, do we have any option for reconciliation account? This one we can take. This is especially for reconciliation account. And then save. सर एक और एक बात है कि इफ यू गो टू कंट्रोल कंट्रोल टैब, वहाँ पे बैलेंसेस इन लोकल करेंसी ओनली, राइट? सो वो कब यूज करते हैं? नीचे वाला। आप हाँ, मतलब दैट वन। when you want that your balance should be only in local currency, उसमें आपको दूसरी करेंसी में देखना नहीं चाहते। मतलब आपकी कंपनी में दो वो है, मतलब दो करेंसी यूज होती हैं कि कभी आपका माल यूरोप से आता है या यूएस से भी आता है, तो आपको पेमेंट यूएसडी यूरो से भी आ सकती है। दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू मार्क दिस ऑप्शन इंडिकेटर। तो ये आप ये कभी मार्क करते भी नहीं हैं हम। गॉट इट, शुड बी गुड टू कीप इट ओपन। हाँ, गुड टू कीप इट ओपन बिकॉज वी डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू रिसीव द पेमेंट इन यूएसडी और यूरो ऑल्सो। और अगर हमें कंबाइंड ट्रायल बैलेंस देखना है, कंबाइंड देखना है बैलेंस शीट, तो इट इज गुड नॉट टू टेक दिस वन। अगर राइट। आपको यूरो में देखना है कि मेरे को यूरो में देखना है मेरा ट्रायल बैलेंस क्या है, सपोज आपकी एक कंपनी बेल्जियम में है एंड दे आर रनिंग द रिपोर्ट, तो दे विल एक्सपेक्ट टू रन द रिपोर्ट इन देयर करेंसी, नॉट इन आईएनआर। राइट राइट। बट आपके जीएल दोनों में कंपनियों में सेम है, तो इट इज गुड नॉट टू टेक दिस वन। गॉट इट। ठीक है, अब आपका जीएल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे शॉर्ट की मेंशन करना जरूरत नहीं है, या नॉट नॉट अ मैंडेटरी फील्ड? मैंडेटरी नहीं है, बट गॉट इफ इट। यू मेंशन इट इज ओके। ओके ओके। ठीक है, आपका नाउ यू हैव वन रिकंसिलेशन अकाउंट फॉर एडवांस ऑल्सो। Same way, we will be creating more reconciliation account for advance, like foreign vendor, like import vendor. How many types of vendor you have in the normal P2P? Same type of reconciliation account you will be creating for advance also. Description, you will mention something like advance to local vendor, advance to foreign vendor, advance to import vendor, like that. Okay. Now let's see further. This is another reconciliation account for service, goods. And now this is the configuration where we are going to link my advanced reconciliation account. This is the path: financial accounting, account receivable and payable, business transaction, down payment made, define alternative reconciliation account. We call it alternative reconciliation account also for down payment. And the transaction code is OBYR, last four digits. Here also it is mentioned. Once you run this path or transaction code, system will open this screen.
In this screen, you can see we have different kind of down payment. First one is down payment on current asset and financial asset down payment request, intangible asset down payment, tangible asset down payment, amortization down payment, stock down payment for order and project. So it depends on business to business what kind of down payment they want to configure. Mainly 90% companies they will have A, which is down payment on current asset, and F, which is down payment request. Now, if your company says, no, I want to bifurcate my financial asset down payment also, then you will be configuring B also. This configuration is already available. You need to go inside of all this A, B, F, I, M, O, V, Z. And what is this? This is special GL indicator. We call it special GL indicator. And you need to go inside of this special GL indicator and assign your advanced reconciliation account. Let me show you in this system. OBYR. So see, this is K. K means vendor. These are special GL indicator. And somebody created also down payment made to vendor. But I would always prefer not to create any new if you have a totally different scenario to make the down payment. So 99% cases we will have A and 99% cases we will have F. Some of the companies will use some other also like tangible asset. It depends on them. But mostly we use A and F. Let's go inside of A. How to go inside? Double click on this A. Now you need to select your chart of account. Once you select your chart of account, you are saying to system that a special GL indicator under my chart of account is going to be linked. And your chart of account is linked to your company code. So linking is happening. Now, once you go inside, you can see this is my chart of account. This is vendor and this is special GL indicator. Combination of this, I am going to do the configuration. Here I will be assigning the normal reconciliation account, which I have assigned in the vendor master. That is why I don't need to mention my advanced reconciliation account in the vendor master. Here I will assign the normal reconciliation account. This is my normal reconciliation account. And in front of that, I would be selecting my special reconciliation account, or you can say alternative advanced reconciliation account. Now, whatever vendors are having this reconciliation account, now those are linked to this special GL reconciliation account also. This is the linking between your vendor master to this advanced recon account. If you are having vendors who are having this reconciliation account, that is now linked to this advanced recon account also. Save it and then save in the TR. Understood? Yes. So whenever you are assigning the normal reconciliation account in any vendor, that will have linking between this reconciliation account also, which is for advanced, because normal reconciliation account for domestic and advanced reconciliation account for domestic, it is linked here. Now in vendor master, you will assign only normal reconciliation account, which is 101201. Mm. You don't need to do again advanced reconciliation account mapping. But Got if it. you have a different vendor, like you have a foreign vendor, and for that you have a foreign reconciliation account, then you need to do this configuration also. Got it. And sir, special GL indicator जो है, are these created at the client level? No, yeah, this is at client level, but once you go inside, then it will ask you chart of account. Yeah, then these are created at client level. So you are bringing them to your, assigning them to your chart of accounts Yes. level or your Now company code level. this configuration specifically for your company code, Company code. your chart of account, Yes. because this is already created it at the system level. Client level. Client level. Now Mm. you double click, it asks you for the chart of account. It means now Mm. you are going to do the configuration for your company code, for your chart of account. Yeah. Okay. Now this is the only configuration for advance payment. फिर इसमें कस्टमर के लिए हम क्या करेंगे? कस्टमर के लिए कस्टमर का बाद में है।
करंट जब लाइबिलिटी में कस्टमर चाहिए। जब कस्टमर का आएगा, हेयर वी विल बी एबल टू सी डी, हाँ बराबर। वो अभी नहीं, जब व्हेन वी विल बी डूइंग कस्टमर वो उसके केस में देखेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू द टेस्टिंग। सो to make the down payment, to make the advance payment, we have a transaction code F-48. Okay, let's run F-48. यहाँ पे let's take today's date, and here it is taking KZ because this is payment, document type, company code, currency, and vendor. Let's see how many vendors we have. Okay, let's take first one. Here I will be selecting the special GL indicator, and as of now I have configured the special GL indicator only A. If you have other special GL indicator also configured, then you can take the other also as per the business requirement. If you are doing the security deposit, then you need to configure for security deposit also. If you are doing discount, if you are doing suppose guarantee received, something like that. But I have seen very rare those are those indicator. Mostly I have seen A and security deposit and request one. This one, F1. Now we will select the A, which we have configured. Now here we will be taking the bank. Let's take HDFC Bank. An amount, suppose I'm going to make a payment of 12,000 in advance. Now I'm getting some error. How to resolve this error? OBS 7 to go to the number and just. So instead of OBS 7, definitely you can go through OBS 7. Then you will look for document type. Then you will have 15 here. Then you will go to this one where you maintain the number in. So instead of going to OBS 7, we have a direct transaction code FBN1, which is for this screen. If you know, you are only going to create. But if you want to check document type also, then you need to go via the OBS 7. So 15, save, close. Now enter. Okay, now I need to run again this transaction code because sometime error. Okay, now we are getting different error. That error is resolved. Now who will help me to resolve this error? And one more thing, whenever you get any error and you are unable to understand, then what you can do, double click on the error. System will open complete information. Sometimes system will provide you the solution also. Here it is says error this is the message number. This is very important message number. Suppose I copy this one and I go to Google and I enter only message number. System will give me something that posting period message. Or if you copy this complete one, then you will have more clear information on Google what is the issue. See, posting period not open for account type this. So this way we find the solution on Google, but sometimes it is difficult. Sometimes based on our knowledge, we are able to resolve. Sometimes we go to Google. Sometimes SAP provide the solution on this information. So here it is saying check table this one. For record type 0, select company code, account type S, which is GL. For this GL, if required, make sure that entry is made in the table for an interval is changed. So this table is for OB52 transaction code. Okay, let's go to OB52. Chart posting period variant, and here I will say for this one I will have 12 and changing to all. Why sir, all we need only for S category, right? Only for special GL, sorry, GL entries. Not only special GL, in the entry you will have two types of account. One is special GL, second one is vendor. Then you need to create this one also because vendor is also Uh, getting used. okay. But I'm keeping it open for 12 for all because Okay, we will be okay, doing posting. got it.
Okay, because in this transaction, this is my vendor. It is going to be used. This is my GL. It is also going to be used. Okay, now enter. Now entry is required. Field assignment is permitted for entries field. Let's remove this one, assignment field. Now let's see. Now we are able to move forward. Now after so much of error resolution, I forgot what was the amount I have entered. Now I don't know. So instead of going back, I will put star. Amount will be picked from the previous line. And suppose I want to copy the text also, then I will put plus. And then enter. Amount is coming. Text is also coming. Okay. Now simulate it. Now entry, you can see vendor is bank is making the payment of 12,000. Vendor is getting the payment of 12,000. It is 50 posting key because this is GL. GL is getting credit. Now it is 29. 29 is for debit the vendor for advance payment. And A means which you have selected for making the advance payment. 29A means 29 is for debit the making the advance payment, and A means special GL indicator which you have selected while putting the information in the F-48 transaction code. Understood this entry? यस सर, वन क्लैरिफिकेशन, हमने वेंडर जीएल वेंडर हमने वहाँ पे डाले थे क्या, या वही पुट ओनली तो? No, no, we have entered अ, vendor. हमने reconciliation अच्छा account नहीं डाला. अच्छा। We enter this number only. Impact उसका reconciliation account में आएगा because of this one. हम्म, उसका impact आएगा advance reconciliation account में because this vendor is having one recon account. In front of that recon account, we have a advance recon account which is linked to this special GL indicator. तो एसएपी में सबसे ज्यादा अगर आपको लिंकिंग समझ आ रही है, इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस. गॉट इट। हाउ कैन आई सी how much of down payment or payment I have made to each of the vendors? I Can will. I? Yeah, we can see. I will show you. Okay. ठीक है. Now I'm going to save it. Now I'm getting one error which you cannot resolve it. I'm going to resolve it quickly, but I will definitely. This is also part of our course, which I will be covering at the end of the course. ये क्या है सर, थोड़ा बता दो या बाद में बताएंगे? मैं बाद में अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा आप. ओके ओके। ठीक है. Now let's simulate again and now post it. Now document is posted. 15 ending with 0. The number range is coming from KZ document type. Okay, now see the document. Now in this document, you will see this is my bank GL, which is for 50. Vendor is getting debit with 29. Posting ki, let's see what is 29. That is why initially I was saying you only need to remember 40, 50, 31, 21, 01, 11. Other posting key will come automatically in the transaction. You did not select 29. It is coming automatically. Okay, let's see 29. 29 is for vendor debit for special GL debit. Means special GL indicator will be used. Okay. Now A means down payment which we have configured for current asset. Now vendor, this one. Okay. Now click on general ledger view. If you click on general ledger view, instead of vendor, you will be able to see the reconciliation account. And what is the reconciliation account coming now? एडवांस पेमेंट रिकन अकाउंट। एडवांस वाला आ रहा है, नॉर्मल वाला नहीं आ रहा बिकॉज दिस इज एडवांस पेमेंट. इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रिकंसिलेशन अकाउंट, वेंडर इज शोइंग यू एडवांस रिकंसिलेशन अकाउंट बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल जेल इंडिकेटर. इसका इम्पैक्ट अब खाली वेंडर में है एंड एडवांस रिकंसिलेशन अकाउंट में है. नॉर्मल रिकॉग्निशन अकाउंट में नहीं है. वो भी हम चेक कर लेते हैं रिपोर्ट में. दिस इज द डॉक्यूमेंट नंबर. लेट्स फर्स्टली गो टू वेंडर रिपोर्ट. ये मेरा वेंडर है. नाउ ओपन आइटम. दिस इज
Where is my document number? Let me have the document number. ठीक है. Now tell me, this is the document number, but why I am not able to see my document, which is for 12,000? Any clue? Come again, sir. So we are unable to see my data in this vendor, which we posted just now, document number 15 ending with 0 and amount is 12,000. This is my vendor report. Why I am not able to see my document? If you click on all items, I think you should be able to see it. No, no. And the special transaction is not included. This is the scenario. This Yeah. is the case. As of now, my document is open, but it is not coming because my document is special GL. So that Hmm. is why I need to click on special GL transaction, then execute it. Now you can see my document is coming, which is for 12,000. सर यहाँ पर काम कैसे गए बिल 1N? हाँ, FBL 1N में आपने वेंडर डाला. ओके ओके. And now open item, and now you are saying normal item plus special GL transaction I want to see. Then your both type of transaction will come. These are normal, and this is my special GL indicator, which you can see A is there. Okay, suppose I say I want to only see my special GL. So this is the way to check how many advances we have in our vendor. So now you will be able to see only my advance payment. See, this is my special GL indicator A, document number this, and this is the amount, and this is the description. And this is my advance payment report. If I have made multiple advance payment to multiple vendors. Then you will remove this one, and then you will execute like this. Or let's do one thing. Let's made one payment to the different vendor also. F-48. I think we created only one vendor, Amigo. Now we have made two advance payment to do two different vendors. Instead of now entering the vendor number, I will remove and I will keep only special GL transaction and I will get both the documents. How can I see for which vendor have I made the payment? It's not coming here. Yeah. Click on this layout. Wait. Here you have change layout. Now then look for the vendor number or vendor name. Let me see. Or maybe supplier number, maybe. See. Supply just. So select it and where you want to see, move from right side to left side. So it is here now. Now copy. Now you can see this is my supply for this payment. This is my supply for this payment. I think supply name will also be there, right? To see that. Yeah. So whatever it is there, you can keep it to left side. Hmm. It's up to you. Whatever information you have. And some information which you are unable to see here, we can add also. The supplier name is not there. How can I add that? Because that is also important. Wait, let me firstly see supplier name is there or not. Okay, supplier name is not there. So if you want to add, first of all, that field should be technical field. Let me go to, I'm not going to tell you how to add, but I will tell you, I'm telling you we can add it, but I will be covering this thing later on. Nobody covers that point because it is going to be, I would say, knowledge when you are having experience of 4 to 5 years. LFB1. Here we have supplier name. No. Here we have supplier name. Let's see. I have supplier name here.
see. I don't think so. Name one. Let me try. Not every field we can edit, but some of the fields we can edit. Define additional field for line item display. So here I'm going in the supplier. It is going to add field in the supplier report. Let's go here. So here I can say new entry LFA1. Why I'm saying LFA1? Because data for the name is available in LFA1. And here it is saying unable to determine a search help for this input field. So system is not going to add that supplier name. We have option to add for this table BKPR, BSEC, BSET, BSEC, pair and this one. So we cannot add from our side. Now, but suppose business say, no, I want to add it. How we are going to do so? Add it in different table. BS No, easy. no, BSEC, it will not have that data. BSEC is for accounting document table. We just run it. Or maybe let's do one thing, enter my company code. So here we have posted document, this one. Let's see vendor. Here it is assigned. This is my reconciliation account. This is my advanced reconciliation account. This is my supplier, but name is not there. So we cannot add name from our side. Now I tell you how you can add it. No, we cannot add it. Now let me open the Excel. Now FBL1 and you want to add one field, which is vendor name, but you cannot add it from your side. For that, what you need to do, you need to write the technical name LFA1 and their name is I think it was name 1. In table LFA1, field name is name 1. This is table name, this is field name. So what you are going to discuss with ABAPer. You are going to discuss with ABAPer that in this report, I want to add my vendor name also. So what you will say that please create the copy of this report, FBL1N, because normally we don't touch standard report or standard transaction code. If you are adding something, you will create new report. So for that, ABAPer will copy this report and give the name like that. It is FBL1N, which is standard. This is ZFBL1N, it is enhanced. So what they are going to do, completely copy this one, and then plus add the field from LFA1 to this field. Like that. So they will copy the FBL1N report and add one field from LFA1. The field name is name1. And this is, I don't think so you need to understand as of now. Otherwise you will be confused. But there are two ways to add the field. One is functional, second one is technical. Some fields you can edit, but not every field. But if you want to add fields which are not available for you to edit, then you need to go via this path. You need to connect to ABAP consultant, and then they will be writing the logic, writing the code to have this field also in this report, which is copy of FBL1N plus this field. Understood? Yes, sir.
Now let's see what next we have. The document we checked how to post, and in the report also we checked how we can see what is my advance payment and what is my normal payment. So click normal, then you can see this is my advance. Only these two items are my advance payment. All the other items are normal invoice or normal payment. Okay. Now go back. What else? Okay. Now let's go to the. Now we have checked how to check the report FBL1N, and now you have made the payment. Now against that payment, you will get the service and then you will get the invoice. Suppose we have received the invoice for 10,000 rupees out of 12,000 rupees. And for that, we are going to post the invoice. To post the invoice, we have two transaction code, FB60 and then F-43. Now, who will tell me what is this purpose of this F-43? If you including the We go to manual posting key. So This is update posting. manual posting for vendor. But if you want to post GL customer posting in this transaction code, can we do that? How we can do that? Why? How? By putting the manual document type, you can change the document type and put the manual posting key. Why we are able to post customer and GL posting in this transaction code? What is the reason? So we can select manually the posting key and change the document type on the top. That is correct. But why we are able to post manual entry in this vendor invoice top the T code for customer invoice? Last time I showed you SC93 transaction code where you check this transaction code is calling this FB01. And if I call F-02, system is calling backend in the same transaction code. So it is only the name of the transaction code in the backend. System is calling the transaction code, which is for putting the manual transaction, any kind of. You can do SM also in the F-43. What is the transaction code that you mentioned on this, sir? SE93. SC93. Okay. Now I'm going to use the transaction code FB64 vendor invoice. Now I will be taking the first vendor where we have 12,000. Okay. So out of 12,000, I'm going to put the invoice for 10,000. Okay. Now let's take the GL. Take this one. Okay. Now system is saying in this vendor, you have 12,000 rupees document open for advance payment. Whenever you put the invoice in FB60, then system shows you this warning message also that you are putting the invoice and there is some advance payment is open in this vendor. It is only the information. Why it is showing you this information? Because system is saying if you are putting the invoice, please check this invoice is for this advance payment or not. That's it. And then okay. And then simulate it. Your entry is getting posted. Expense account debit to vendor. Now save it. Now go to FBL 1N. Now I don't click on special GL. Here I have 10,000 rupees invoice which we just posted. Now I want to see my special GL transaction also. So I'm saying this is my advance payment and this is my normal invoice. So I want to clear this and this, and then my 2,000 rupees will be open. sir, hello, please sir. Uh-huh. Sir, why we make payment less than the invoice payment? No, more than the invoice payment.
because invoice is around 12,000 and the invoice is around 10,000. We make a payment of 12,000. We have to make a payment less than the invoice, na? But we नहीं, have payment, we have make अभी payment आई more than the invoice. अभी आई हैव रिसीव द इनवॉइस ओनली फॉर 10,000 मे बी नहीं, आई विल yeah, गेट yes, sir. मोर इनवॉइस ऑल्सो, Okay, okay, okay. बिकॉज अभी तो मेरे को 10,000 का इनवॉइस मिला क्योंकि उसने 10,000 की सर्विस दी है। अभी ही Hmm. विल प्रोवाइड मी सर्विस फॉर 2,000 और मे बी 5,000 और मे बी 10,000 मोर, देन ही विल बिल मी फॉर अनदर अमाउंट, देन आई विल मेक द पेंडिंग पेमेंट ऑल्सो। अभी Okay. 10,000 का इनवॉइस आया है, आगे 2,000 का आएगा तो मैं 2,000 के और पेमेंट, पेमेंट तो है ऑलरेडी। अगर वो पाँच हाँ. करेगा तो आई विल मेक द 3,000 पेमेंट। Okay, okay. इनवॉइस तो So अभी पार्शली 2,000, करा सकते। हाँ, 2,000 is left now for making invoice. हाँ, अभी मेरा जो है, मेरा अगर मैं इन दोनों को कंपेयर चेक करूँ, लेट सी आई पुट दिस डेट ऑल्सो, वेट, Hmm. ऑल आइटम, ठीक है। अभी आपको क्लियर है, मेरा 10,000 का इनवॉइस है, मैंने 12,000 की पेमेंट कर रखी है, तो 2,000 रुपये की तो Hmm. मेरी अभी भी एडवांस चल ही रही है। Hmm. अब मेरे को 5,000 का इनवॉइस आता है तो 2,000 की तो एडवांस दे रखी है, मैं 3,000 की पेमेंट करूंगा और। Hmm. बट यू नीड टू डिसाइड कि जो आपको 5,000 का इनवॉइस आ रहा है दैट इज फॉर अगेंस्ट दिस डाउन पेमेंट और नॉट, इफ नॉट देन यू विल मेक अ पेमेंट ऑफ 5,000। आप एक वेंडर से सपोज दो टाइप की सर्विस लेते हो, एक टाइप की सर्विस में उसने कहा मुझे एडवांस दो, दूसरी टाइप की सर्विस में मैं आपको इनवॉइस दिया करूंगा, पेमेंट करोगे और उससे आपको सर्विस मिलेगी। तो वो डिसाइड आपको करना है कि जो आप इनवॉइस आ रहा है, अभी ये जो 10,000 का इनवॉइस आया, सपोज आई से दिस 10,000 इनवॉइस इज नॉट अगेंस्ट दिस डाउन पेमेंट, दिस इज सेपरेट इनवॉइस, देन आई विल मेक अ पेमेंट ऑफ 10,000, फिर मेरा 12,000 रुपये एडवांस पेमेंट तब भी खड़ा रहेगा। The process क्लियर। how we, sir, what is the process how we link that advance payment which we doing before, link to the payment which we currently in the invoice, air invoice, मतलब सर हमने 12,000 की पेमेंट करी थी और हम्म। हम कैसे अपनी पेमेंट को बताएंगे कि मेरी ये 12,000 की पेमेंट इस इनवॉइस से लिंक है। हाँ, मेरे को वो ये तो क्वेश्चन। वही तो, वो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जब आपका इनवॉइस नंबर होता है, दिस इज योर इनवॉइस नंबर फील्ड, यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि व्हाट इज माय दिस वन, सो दिस डाउन पेमेंट इज अगेंस्ट दिस इनवॉइस नंबर, ओके। या अभी के लिए यू डोंट नो कि इनवॉइस नंबर, तो यू विल एंटर समथिंग और ओके, मे ये बी। सर डाउन पेमेंट का रेफरेंस नंबर है जो हमने इनवॉइस से लिंक हाँ, मतलब अभी आपके पास सपोज इनवॉइस नंबर नहीं है, अभी आपने कर। यहाँ पे सपोज आपने कुछ डाल दिया इंस्टेड ऑफ इनवॉइस नंबर, आप कह रहे हो एडवांस पे एंड इट इज फॉर मार्च 2025। अब अभी आप ऐसे डाल दिया, मतलब इट डिपेंड्स ऑन कंपनी की वो क्या प्रोसीजर फॉलो करती है टू अंडरस्टैंड दिस डाउन पेमेंट इज फॉर विच काइंड ऑफ सर्विस। और जब उसका इनवॉइस आएगा, आपने जैसे यहाँ सेव किया, ठीक है, अभी आप रिपोर्ट पे आ गए, यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, अभी मैंने इस वाले इनवॉइस के अगेंस्ट में मैं कहता हूँ ये जो मेरा इनवॉइस है इट इज फॉर मार्च 2025, ठीक है, नाउ सेव इट। अब मैं यहाँ पे रेफरेंस फील्ड भी ले आता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने रिफ्रेश नहीं किया, रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर वापस चला गया, वापस लेके आते हैं। अब देखिए, आपने इस डाउन पेमेंट में कहा कि एडवांस पेमेंट है ये मेरी मार्च के लिए, और यहाँ पे आपके पास इनवॉइस है मार्च 2024, तो आपको शायद थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये जो पेमेंट है इसी इनवॉइस के अगेंस्ट में है। सपोज आई से दिस इज इनवॉइस, आई से दिस इज February 2025 इनवॉइस,
Now refresh it, take it back. जैसे बार बार जो चला जा रहा है तो इसका कोई फिक्स नहीं है, जैसे हम है चाहते हैं इसको? फिक्स भी है, वो भी बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फैब का इनवॉइस है जो डाउन पेमेंट आपने करी मार्च के लिए करी है, तो ये इनवॉइस इस अगेंस्ट डाउन पेमेंट की नहीं है। वो कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा, यूजर को डिसाइड करना पड़ेगा, जो एपी रन कर रहा है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। वो आपका काम है ही नहीं। आपको प्रोसेस बनाना है कि ये प्रोसेस चले। बिजनेस डिसाइड करेगा ये इनवॉइस मेरा इस डाउन पेमेंट के अगेंस्ट है या नहीं है। लिंकिंग करना चाहते हैं दे नीड टू हैव अ रेफरेंस, या कोई टैक्स में आप इंफॉर्मेशन दे विल पुट कि मेरा जो टैक्स है ये बताएगा कि ये मेरा इनवॉइस कौन सी डाउन पेमेंट के अगेंस्ट में है। क्लियर? जी सर। तो इसको क्लियर कैसे करें? फॉर एग्जांपल हमें पता चला हाँ कि ये डाउन पेमेंट इसका इन्वेस्ट वो के लिए है। करते हैं, वो प्रोसेस है, वो बताता हूँ अभी उसी का। ओके। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे हमने डाल दिया। आप कह रहे हो कि बार बार हम इसको फिक्स कैसे करें, कि आपको रेफरेंस नंबर हमेशा चाहिए। तो मैंने रेफरेंस नंबर ऐड कर लिया। सपोज आई से आई वांट टू ऐड सम मोर फील्ड आल्सो, प्रॉफिट सेंटर। या प्रॉफिट सेंटर में तो कुछ होगा नहीं अभी हमारे पास। ठीक है, मैं से ऐसे फिर ठीक है, प्रॉफिट सेंटर ही ले लेते हैं अभी। और एक आधी चीज़ और ले लेते हैं, पेमेंट करेंसी ले लेते हैं, सॉर्ट की ले लेते हैं, गो है। नाउ इफ आई, नाउ सी, आई मेरे पास पोस्टिंग की, पोस्टिंग डेट, कंपनी कोड, करेंसी, ये एक्स्ट्रा फील्ड आ गई है। और यहाँ पे सॉर्ट की आ गई, ये सब आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, अब कहते हो कि हर बार मुझे ये फील्ड सेलेक्ट ना करनी पड़े। वेन एवर आई एम रनिंग दिस रिपोर्ट आई वॉन्ट टू हैव दिस फील्ड ऑल्सो इन माई रिपोर्ट। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट तो कर ली। नाउ आपको क्या करना है, सेव करना है। यहाँ पे सेव का लेआउट का बटन है, इसमें आप अपना कोई नाम दे दो। सपोज हम देते हैं ZZ01 हमारी कंपनी कोड का, और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, नाउ गो बैक and run it again, and then select your name, which is this one, ZZ01. Once you click, all the fields will come automatically. Clear? यस सर। Now I go back and run it again. Again, I need to select. Now Santosh ji says that I want to automate this also, that every time I don't need to select my layout. Correct, Santosh ji? यस सर। Now go back, and here you have layout option. हम्म। Select layout your ZZ01. Now it will come automatically with the layout which you want. सुपर। ठीक है, आप अगर आप कुछ और भी ऐड करते हो, सपोज एसेट हम ऐड करते हैं, आप इसको ओके करते हो, फिर आप इसको सेव करते हो, देन save it again with this same layout, then it will add this field again. So it is saying layout already exists and is completely overwritten. Yes, I want to. Then it is added. Asset number also will be added here. See. Now go back. Now you don't need to select again because it is already mentioned here. Now you have all the information available without selecting again and again. This is called layout selection and layout, or maybe you can say selecting the field in your layout. Okay. Now go back. So we have posted the invoice for 10,000 and we have made the payment of 12,000. Now we want to clear 10,000 because 10,000 invoice we have received, and now we, instead of, let me go to report again. So instead of this 2,000, I want, instead of seeing all the line items, I want to see only 2,000 open, which is also advanced. So what I need to do, I need to clear this 12,000 and I need to make this 2,000 as advance payment against this special GL indicator. This is first scenario. Second scenario is what example I can give you? Second example would be when you are receiving the complete payment 12,000, 12,000. Then you will clear both of them and your balance will be zero. That also we will see after that. Okay. Now let's see what is the process.
So this is posting. This is manual posting. We post it through FB60. Now in the report, you can see how to check. We have already checked. Now we have transaction code F-54 to transfer your advance payment to normal payment. It is saying advance payment to normal payment. And then we will be clearing 10,000 to my 10,000. Then advance payment will be open only for 2,000 because now I'm saying I have received the invoice for 10,000 against this my advance payment. So I will clear 10,000. For that, I need to transfer my advance payment of 10,000 to normal payment. Okay. How to do so? For that, we have a transaction code F-54. Let's run F-54. Just give me a second. Okay. Now here you need to enter the all the information. This time system is taking the document type KA. Let's see what is KA. K is for vendor document. Close. Now enter your vendor. So what is my vendor? Where we have invoice and down payment, this one. And remove this one, this one. And now enter. Enter something if you want to enter here. Now I'm getting error. How to resolve this error? Yes, the document time to KJ. Because the advance payment is at against KJ. No, advance payment is K. No. So error is coming. Number and 6 is missing. So why it is saying Oh, 6? Because it is KA. For KA, it is maintained 6. hmm. Then you're not given that number range. Yeah. For KA, we have not given the number in 6, the series. So it is 6 here. In front of 6, we do not have any number in maintain. So for that, we need to maintain 6. That error. Now you can see amount of 12,000, which is advance payment, it is coming. If you have made multiple payment in this vendor, system will show you all the advance payment here. Okay. Now wait, it is not. Now in right side, you can see how much amount you want to transfer from this 12,000. This is my advance payment. Now I want to transfer my advance payment to normal payment. And for that, I have received the invoice for 10,000. So you can transfer complete amount also, or you can transfer partial amount also. We have received the invoice partially. So we are going to transfer the 10,000. For that, we have received the invoice. Understood why we are transferring 10,000 to normal payment? Yes. So another scenario is that I have received two invoices having 10,000 each. So I want to clear this 12,000. I mean, out of this 10,000 against to one invoice, right? So how can we specify that and against which invoice I need to clear that? That business needs to decide. That is a business decision. That is not consulting decision. Okay, and that will happen in FBL one, and as per the reference, they can clear They, them. they will decide which invoice they want to clear. That is Hmm. business decision. That is not consulting. You are going to be a consultant. You are ठीक है not going to be a business team member. ठीक समझ गया सर ठीक है? या तो अभी now why I am telling you all this process because business decide तो करेगा, but हम्म business will not know how to do that. यस वो आपको बताना है कि कैसे कर सकते हैं. यस सर ठीक है. Now I'm transferring my 10,000 to my normal payment from 12,000 advance payment and then save post it. Now document is posted 6 ending with 0. Now open this document. You did not post, you did not enter any posting key. System is taking automatically. That is why initially I was telling you some of the posting key you need to remember 40, 50, 31, 21, 01, 11, 70 and 75 mostly. Other posting key will come automatically, but you need to understand. You don't need to remember.
Okay, now click on display. Now here you can see 26 is coming, 39 is coming. 39 why coming? Because at the time of making the advance payment, 29 was coming. That was for debit. This time it is credit because we are transferring 10,000 from advance payment to normal payment. And this is 26. What is 26? Let's see. I also don't know. It is payment difference. So it is coming automatically. Let it be. Now go back to your report. FBL1N. And now I say this one. And now we want to see what is happening in my report now. Now you have 10,000, 10,000 minus 10,000 plus, and 12,000 is also open. Now let me just explain you. So this 10,000 and this 10,000, or maybe sorry, this one and this one, you can clear KR with this one. And now after that you have 10,000 credit and 12,000 debit. And now you have open with 2,000 only. Is it confusing? No, the care document type is invoice type. Now see, wait, let's put it this one together. Now this one, this is cleared invoice, and Hmm. this one is normal Payment. payment which we transferred from advance. So you are going to clear this and this. Perfect. Now you had only this 12,000 advance Yeah. in debt. Now you have 10,000 credit also for advance. So it means only you need to make a payment of 2,000. This is first scenario to clear. We will have another way also to clear that also I will show you. Hmm. Now this one I will clear manually. So F-44 is the transaction code. F-44, here I will enter the vendor number 43. And this is this one. No, I will take this one. Okay. Now I want to select this document and this document. Where is my document number? This is my document number, this and this. Now here, if I know my document, I can enter the document here. Copy both the documents. I pick one document and I enter. Then system will give me option. Now system is giving me another error. 04 is missing. Same thing we need to do. Now I don't know what is the document type is going to pick. So instead of going to OB7, I will go to direct FBN1. Here I will maintain the number is 404. Okay, now this error will go lab test 44. Document number. Enter the document number which I want to clear. So this document and this document, this is plus and this is minus. This is invoice and this is normal payment, which we got it from F-54 transaction, and we got this advance credit payment also because we transferred normal payment 10,000. And now enter and then click on process open item. You are able to see both the lines. This is the document, this is the document, plus and minus. It is get. कैसे? हमने तो खाली 60,000 तो 6 zeros हमने जो दिए थे, but how come the second one came there? We entered both the documents. ओके ओके ओके. ये mention दोबारा दिखाता हूँ. सॉरी सॉरी, मैं मिस कर गया होगा. ये दिखाता हूँ. यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर ना, यहाँ पे आई एंटर दिस इज वन डॉक्यूमेंट, दिस इज अनदर डॉक्यूमेंट. हाँ, ओके ओके, समझ गया. एंटर एंड देन प्रोसेस ओपन आइटम. यहाँ पे डेबिट भी आ गया, क्रेडिट भी आ गया, एंड देन सेव इट. आपका एक डॉक्यूमेंट बना 4 का एंडिंग विद 0. नाउ लेट्स सी इन दिस रिपोर्ट. ठीक है, रिफ्रेश इट. अब आपको देखो ये वाला डॉक्यूमेंट मैं दोबारा फिल्टर करता हूँ, सॉर्ट करता हूँ. दिस डॉक्यूमेंट एंड दिस डॉक्यूमेंट इज क्लियर्ड, क्रेडिट एंड दिस वन, एंड द क्लियरिंग डॉक्यूमेंट इज दिस वन, या जिससे भी क्लियर किया. अब ये वाला और ये वाला ओपन है.
एंड इससे हमें पता चल रहा है नाउ वी नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ओनली 2000। क्लियर? या अब अगला सिनेरियो मैं आपको खाली एक्सेल में बताता हूँ, सिस्टम में कल बताऊंगा। अभी हमने एडवांस पेमेंट करी, सपोज 12,000 की अगेन। ठीक है, अब हमने उसको इनवॉइस आया हमारे पास 10,000 का, सेम, नहीं 12,000 का। नाउ आई नीड टू ट्रांसफर दिस 12,000 टू माई नॉर्मल पेमेंट, दिस इसको। अभी मेरे ये ए के साथ डिसाइड दिखता है, मुझे क्लियर करना है, तो मेरे को ए से नॉर्मल लेके आना पड़ेगा, जो हमने आज सीखा। बट मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम एडवांस टू नॉर्मल, आई विल क्लियर डायरेक्टली। हाँ वो हम कल देखेंगे, वो सेकंड वे है। अभी आपको ये समझना था, अब आपने ये क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर दिया। अभी आप इसको क्लियर करने के लिए आपके पास 2,000 रुपये का इन्वॉइस आएगा। आप तीनों डॉक्यूमेंट को इकट्ठे क्लियर करोगे, कैसे? जैसे अभी हमने F-44 के थ्रू किया। बट लेट मी रन अगेन द ट्रांजेक्शन कोड। यहाँ पे ये किया आपने, सपोज मैं ये दोनों डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, या मैं 2,000 का डॉक्यूमेंट एक पोस्ट भी कर देता हूँ, हम तीनों को क्लियर करेंगे। सर, वहाँ पे जो राइट लेफ्ट साइड में जो ये एक टिक वाला बॉक्स था, क्या उसका थोड़ा मैंने क्लियर नहीं कर सकता? ये वाला। इज इट? नो, आप करिए, मैं बाद में बताता हूँ। वंस यू गो बैक विल से। हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या दिखा था, 2,000 की डाउन पेमेंट ओपन खड़ी है, बिकॉज बाकी आपने क्लियर कर दिया। अब मैंने डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिया, मैं इस पे पहले आपको रिपोर्ट पे दिखाता हूँ। ओपन आइटम, स्पेशल जेल भी रखा हुआ हमने। अब मुझे बताइए, कुछ पेंडिंग है हमारा देने को? नहीं। और आपको ये भी पता चल गया कि ये जो मैंने, एक सेकेंड, इसको सॉर्ट किया, एक सेकेंड इसको, अच्छा इससे सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये मेरा माइनस, ये माइनस हो गया 12,000, और ये भी मेरा हो गया 12,000। एंड आई नो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर लिंक टू ईच अदर, तो आई कैन क्लियर ऑल ऑफ देम। ठीक है, वो आपको नहीं डिसाइड करना, वो बिजनेस को डिसाइड करना है हाउ टू डू, वी आर गोइंग टू चेक। ठीक है, अब हम तीनों डॉक्यूमेंट को क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक है, F-44 करते हैं। यहाँ पर मैंने वेंडर लिया, मैं इसका डॉक्यूमेंट नंबर ले लेता हूँ, इन तीनों डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला स्क्रीन कैसे लाया सर आपने, जो क्रॉस वाला? वो कंट्रोल Y। कंट्रोल वाई। हाँ, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको कॉपी करना होता है, आपको कंट्रोल Y करना होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने तीनों डॉक्यूमेंट कॉपी कर लिए, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने तीनों डॉक्यूमेंट डाल दिए। तीनों डॉक्यूमेंट एंटर है, एंटर है यस। तीनों डॉक्यूमेंट। यस। नाउ एंटर एंड देन क्लिक ऑन प्रोसेस ओपन आइटम। अभी आपको कितने डॉक्यूमेंट आए हैं? एक। बाकी दो क्यों नहीं आए? बाकी दो यहाँ पे देख लेते हैं, कौन से वाला डॉक्यूमेंट आया है? 1004 वाला, 1004 है ये वाला, पहला वाला। बाकी दो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आए वहाँ पे? एनी एनी क्लू यू कैन थिंक ऑफ? ये तो इनवॉइस है, ये तो एडवांस पेमेंट है। आई टेल यू, देखिए, इसका एडवांस में 12,000 जो है, उसमें आधा हम ट्रांसफर कर चुके हैं, 10,000 हम ट्रांसफर कर चुके हैं। तो दोनों ही नहीं आ रहे, दोनों डॉक्यूमेंट आपको डिस्प्ले नहीं हो रहे वहाँ पे क्लियर करने के लिए, खाली ये वाला आ रहा है। हम्म वाई? वाई? एनी क्लू? इसी स्क्रीन पे आपके पास आंसर है, इसी स्क्रीन पे आपके पास आंसर है, ये है आपका आंसर। दोनों ही एडवांस पेमेंट है। दोनों एडवांस पेमेंट है, तो वी नीड टू एंटर दैट कि, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे किया, वेंडर डाला, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाला, यहाँ पे मेरे को स्पेशल जीएल इंडिकेटर देना कि आई वांट टू इंक्लूड माय स्पेशल जीएल ट्रांजेक्शन ऑल्सो। हम्म।
तो अब मैं यहाँ पे गया, मैंने तीनों डॉक्यूमेंट नंबर डाले, एंटर, एंड प्रोसेस ओपन आइटम। नाउ यू विल गेट ऑल ऑफ देम। हम्म। तो इनके साथ जो था स्पेशल जीएल इंडिकेटर लगा था, दैट आई ऑल्सो नीड टू मेंशन कि इंक्लूडिंग नॉर्मल प्लस स्पेशल जीएल आई वांट टू सी। अब आपका ये तीनों आ गए। नाउ अब मैंने कुछ ट्रांसफर तो किया नहीं इस 12,000 से। दिस इज माई सेकेंड सिनेरियो। पहला सिनेरियो है कि यू विल ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम एडवांस टू नॉर्मल, फिर आपको नॉर्मल वाले को क्लियर करना है। बट आई एम सेइंग नहीं, आई डोंट वांट टू ट्रांसफर, आई विल क्लियर डायरेक्टली। तो आप एडवांस पेमेंट आपकी 12,000 की थी, ये 10,000 रुपये हमने ट्रांसफर कर लिए थे, 2,000 रुपये तो अभी भी एडवांस में खड़े हैं। और इसको मेरे नॉर्मल क्या मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब अमाउंट इज गेटिंग मैच, -2,000, -10,000, -12,000, एंड नाउ पोस्ट इट। डॉक्यूमेंट आया 4 एंडिंग विद 1। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा 4 एंडिंग विद 1, बिकॉज इन तीनों डॉक्यूमेंट को एक डॉक्यूमेंट ने क्लियर किया, वो डॉक्यूमेंट नंबर है 4 एंडिंग विद 1। हम्म। ठीक है, ये आ गया आपका। इसको सॉर्ट कर। सर मुझे यहाँ पे पूछना था, ये मैनुअली हम एड्रेस 44 में जाके क्लियर करते हैं राइट? इधर लेफ्ट साइड में जो एक अपना बॉक्स है, जो ग्रीन गोला के पास, हाँ ये वाला, ये यहाँ से हम क्लियर नहीं कर सकते टिक करके? नहीं नहीं, ये खाली सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट को। इस सेलेक्ट के बाद आप क्या करना चाहते हो वो आपके पास ऊपर ऑप्शन है ये वाले। आप सपोज डिस्प्ले करना चाहते हो तो क्लिक ऑन डिस्प्ले, तो वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं, आई वांट टू चेंज समथिंग, तो यू विल क्लिक ऑन चेंज। इफ यू से नहीं, आई वांट टू मास चेंज, आई वांट टू चेंज complete like same changes I want to do with all the document, then you have this button। वो भी आके धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। गॉट इट। सो एफडेस 44 में हमें सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करना है, दैट इज द ओनली वे? नहीं नहीं नहीं, मतलब F-44 में आपको क्लियर करना है, बिजनेस डिसीजन है वो। नहीं, कौन सा हाँ। हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ कौन सा क्लियर करना है, वो बिजनेस डिसीजन है। लेकिन हाउ टू क्लियर इट, इट इज थ्रू एफडेस 44 ओनली? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके। एंड वहाँ पे, अच्छा और एक बात जो हमने बात कर रहे थे, जो अपना एडवांस पेमेंट है उसमें से कुछ नॉर्मल पेमेंट को कन्वर्ट करना है, दैट ऑल्सो गोज थ्रू एफडेस 44 राइट? नहीं, F-54। एफडेस 54, हाँ बराबर बराबर। ठीक है। तो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं।